Hello students, today we are going to start a new chapter, that is chemical thermodynamics. Let me introduce you this topic. Chemical thermodynamics is what? See, you can split this in two parts, thermo and dynamics. Okay. Thermo is related to energy or heat, and dynamics is the change. So thermodynamics is the study of energy changes that take place during different physical and chemical transformations. So the different physical and chemical transformations involve energy changes. The study of these energy changes during the physical and chemical transformations is called as thermodynamics. So to study thermodynamics, we need to understand few concepts. Let us understand those concepts. First one is system. So what is a system? To study thermodynamics, we will have to observe some part of the universe. This part of the universe which is under thermodynamic observation, this is called as system. So system is the part of the universe under thermodynamic investigation or observation. So if suppose there is this container, it has water, and we want to study the energy changes that are taking place in water. So this water is our system, because we are investigating water to study thermodynamics. So the part of the universe which is under our observation for studying thermodynamics, that is called as system. Then the next term that we will understand is surrounding. So what is surrounding? The part of the universe excluding the system is called as surrounding. So in this case, we are observing this water. Excluding this water, entire universe forms surrounding. So therefore, system plus surrounding will constitute universe. So system plus surrounding is the universe. See, theoretically we said that surrounding is that part of the universe which is excluding the system. But so what are the thermodynamic changes which are taking place in water will not influence, say, the air outside this room. So therefore, to be precise, surrounding is that part of the universe which is affected by the energy changes taking place in the system. Okay, so for definition's sake, it is the entire universe excluding the system. This is our surrounding, and system plus surrounding together will constitute universe. Now the systems are of different types. First one is open system. See, any system will have two things to share with the surroundings. This is what? Matter, and the other one is energy. So it has two things to exchange with the surrounding, matter and energy. Now if a system can exchange both matter as well as energy with the surrounding, then we say that this is an open system. Say for example, if there is a cup, okay, and here we are having hot coffee. Now what happens? As the time progresses, it is losing heat to the surrounding. Similarly, the vapors are also escaping to the surrounding. So therefore, it is being able to exchange
both matter as well as energy with the surrounding. Therefore, such a system is called as an open system. So, the open system is what? A system which can exchange both matter and energy with the surrounding. ओके, सो ऐसे सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ में दोनों मैटर और एनर्जी एक्सचेंज कर सकती है, ऐसे सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम बोलेंगे. द सेकेंड वन इज क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम किसको बोलेंगे? क्लोज सिस्टम वो सिस्टम है जो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर पाएगी सराउंडिंग के साथ, ना कि मैटर. सो अ क्लोज सिस्टम इज दैट सिस्टम विच कैन एक्सचेंज only energy and not matter with the surrounding. Such a system is called as a closed system. So it can exchange only energy and not matter. What is the example of this? Say in the previous example, if we cover this cup with some plate, what will happen? Now it may be able to exchange energy with the surrounding, but matter will not escape through the system. Such a system is called as a closed system. So a closed system is a system which can exchange only energy but not matter with the surrounding. Okay, an example of this is a cup containing hot coffee closed with a plate. The next type of the system is isolated system. Now, what is an isolated system? Now, if there is a system which can exchange neither matter nor energy with the surrounding, then we say that this system is an isolated system. It can isolate itself from the surroundings. So this is called as an isolated system. So isolated system वो system है जो matter भी नहीं exchange कर सकती है और energy भी नहीं exchange कर सकती with the surrounding. This is called as an isolated system. So it can exchange neither matter nor energy with the surrounding. ऐसा सिस्टम क्या हो सकता है? सपोज उसी हॉट कॉफी को हम लोग किसी थर्मस फ्लास्क में डाल देते हैं. हॉट कॉफी इन अ थर्मस फ्लास्क. What will happen? It cannot exchange energy, it cannot exchange matter. Such a system is called as an isolated system. So open system, closed system and isolated system, these are the three types of systems that we will come across. अब ये सिस्टम जो कुछ भी रहेगा हमारा सिस्टम, उसको और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए जो भी रियल या फिर इमेजिनरी सरफेस रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज बाउंड्री. सो बाउंड्री इज अ रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट्स अ सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग. सो जो भी एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, दैट विल टेक प्लेस थ्रू द बाउंड्री. ओके, so these are the basics of system. Then in thermodynamics we will come across different properties. We will see what are the different types of thermodynamic properties.
there are two types of properties in thermodynamics. One is extensive. Now what is this extensive property? Extensive property क्या है? अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है सिस्टम की जो सिस्टम में कितना मैटर है इसके ऊपर डिपेंड करती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. So extensive property is that property of the system which depends upon the amount of the matter that is present in the system. Say for example mass. अब ज्यादा मैटर प्रेजेंट होगा तो ज्यादा मास होगा, ज्यादा मैटर प्रेजेंट होगा तो ज्यादा वॉल्यूम होगा. सो मास, वॉल्यूम, ये ऐसी प्रॉपर्टीज है which depend upon the amount of matter which is present in the system. कितना मैटर है प्रेजेंट, इस पे जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, these are called as extensive properties. Examples are mass, volume, heat capacity. हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारी प्रॉपर्टीज. इंटरनल एनर्जी, these properties are extensive properties. Okay, the second type of properties are intensive properties. So an intensive property is what? Extensive property depend करती है amount of the matter present in the system. Intensive properties is independent. It does not depend upon the amount of the matter which is present in a system. कि सिस्टम में कितना मैटर प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. कम भी मैटर प्रेजेंट रहेगा तो भी उस प्रॉपर्टी का वैल्यू उतना ही होगा. अगर ज्यादा मैटर प्रेजेंट है तो भी उस प्रॉपर्टी का वैल्यू उतना ही होगा. से फॉर एग्जांपल हमने एक बकेट में पानी लिया है, ओके, उसमें अगर हम लोग थर्मामीटर डीप करेंगे तो सपोज टेम्परेचर इज से 30 डिग्री सेल्सियस. अब उसका एक पार्ट मग्गे से अगर बाजू में निकालेंगे और उसका टेम्परेचर लेंगे हम लोग, सो ऐसा नहीं होगा कि भाई मग्गे का पानी एक छोटा सा पार्ट है तो टेम्परेचर भी एक छोटा पार्ट होगा उसका. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. द टेम्परेचर विल बी सेम इन बोथ द केसेस. सो सच प्रॉपर्टीज which do not depend upon the amount of the matter, these are called as what? Intensive properties. इसको याद कैसे रखेंगे? ये intensive है, independent. Okay, independent. So the properties which are independent of the amount of the substance or amount of the matter which is present in a system, these are called as what? Intensive properties. The example just now we had discussed temperature. Similarly, pressure, specific heat, surface tension, viscosity. Okay. All these properties do not depend upon the amount of the matter which is present in the system. Therefore, these are what? Intensive properties. So there are two types of properties we will come across in this entire chapter. Extensive property and intensive property. Extensive, it depends upon the amount of the matter. Intensive, they do not depend upon the amount of the substance or amount of the matter which is present in the system. Okay. Now next, we will see state functions. This is very important concept that you have to understand in this chapter. State functions. देखिए थर्मोडायनामिक्स में इट्स ऑल अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट. ओके, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सिस्टम में एक स्टेट में होगा. स्टेट मतलब क्या है? वो सिस्टम को टोटली डिस्क्राइब करने के लिए जो भी प्रॉपर्टीज लगेंगे, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शंस. क्लियर? सपोज पानी रखा हुआ है या फिर हवा रख, एयर इज देयर. सो एयर को फुली डिफाइन या डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या लगेगा? उसका प्रेशर कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, या उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं. अगर ये चीजें हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो वी कैन डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम. सो अ गैस इज देयर जिसका प्रेशर हमको पता है, सपोज P1 है, वॉल्यूम पता है V1, टेम्परेचर पता है हम, और नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स उसमें डाले हुए. नाउ
ये जो भी चीज है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट। अब ये कौन सा स्टेट हो गया? इनिशियल स्टेट, स्टार्टिंग में ऐसा है ना। इस पे हम कुछ तो ऐसा करेंगे गैस के में जिसके कारण इसकी ये जो प्रॉपर्टीज है ये चेंज होती है। सपोज इसका प्रेशर P2 हो जाता है, वॉल्यूम V2 हो जाता है, टेम्परेचर T2 हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स तो खैर उतने के उतने ही हैं। सो अब इसका स्टेट चेंज हो गया। सो दिस इज नाउ व्हाट? सम फाइनल स्टेट। तो स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो भी प्रॉपर्टीज हमको लगती है इसको हम लोग बोलेंगे स्टेट फंक्शंस। लेकिन स्टेट फंक्शंस सिर्फ इतना ही नहीं है। स्टेट फंक्शन को प्रॉपरली समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है कि सिस्टम कौन से स्टेट में आ गया, ना कि उस सिस्टम को वहां तक कैसे लाया गया। ओके, उस पे डिपेंड नहीं करेगी। जिस स्टेट में, कौन सी स्टेट में सिस्टम है उसके ऊपर सिर्फ जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन। से फॉर एग्जांपल, अब इसका टेम्परेचर T1 यहां था, यहां इसका टेम्परेचर T2 हो गया। अब T1 से T2 डायरेक्टली तुमने T1 से T2 लेके गए या फिर T1 से और ठंडा किए फिर T2 लेके गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, यहाँ पे क्या है, उसका अभी टेम्परेचर क्या है, दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट कि भाई तुमने उसको पहले कर ठंडा करके फिर और गर्म किया या पहले T3 तक गर्म करके फिर ठंडा कर दिया, दिस इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस। ओके, सो देयरफॉर दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली अपॉन व्हाट? द स्टेट ऑफ द सिस्टम। Okay, so such functions or such properties are called as state function. So state functions are those properties which depend only upon the state of the system and not upon the path followed to reach that state. वो state reach करने के लिए क्या path follow किया गया, इस पे जो properties depend नहीं करती है, इसको हम लोग बोलते हैं state functions. So state functions, there are some state functions written here. We will discuss many more state functions as we go on discussing this chapter. जैसे जैसे हम लोग ये चैप्टर डिस्कस करेंगे हम लोग देखेंगे स्टेट फंक्शन। अच्छा, स्टेट फंक्शंस वो प्रॉपर्टीज हैं जो स्टेट पे डिपेंड करती है। तो क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टीज है जो स्टेट पे, सिर्फ स्टेट पे डिपेंड नहीं करती, पाथ पे भी डिपेंड करती है? यस, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलेंगे पाथ फंक्शंस। सो पाथ फंक्शंस आर व्हाट? Path functions are those properties which depend upon the path followed. Okay, path, क्या path follow हुआ है इस पे डिपेंड जो करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं path function. Say for example work. Okay, work depends upon the path followed. अब हम लोग यहाँ से यहाँ सीधा चले गए या फिर यहाँ से यहाँ जाने के बजाय ये यहाँ पहाड़ी पे चढ़ गए फिर यहाँ से यहाँ नीचे उतर आए। See that there are two different paths followed, but work is different in both the cases. यहाँ से यहाँ जाने में जितना वर्क परफॉर्म हुआ उसके कंपैरिजन में यहाँ जाकर फिर यहाँ आने में वर्क परफॉर्म will be much more. Therefore, work is a path function. Why? Because it depends upon the path followed during the change. Okay, similarly heat. This is also a path function. Okay, so there are two different functions that we have seen. State functions. State functions are those properties which depend only upon the state of the system and not upon the path followed. Okay, and path functions are those properties which depend upon the path followed to reach a particular state of the system. Okay, so these are the basics of thermodynamics. In this we have understood what is a system, what is a surrounding, okay, what is a boundary, and then different types of the system, and then types of the properties. Okay, and very important, the types of the functions, that is state function and path function. Okay, one important thing I would like to tell at the end of this chapter. See, in thermodynamics, absolute values of the properties do not make any sense. Okay, thermodynamics में एब्सोल्यूट जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या है, दे आर ऑफ नो सिग्निफिकेंस। व्हाट इज इंपॉर्टेंट और व्हाट इज ऑफ सिग्निफिकेंस इज भाई चेंज क्या हुआ। अगर सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी तक चेंज हुई तो ये चेंज के दौरान व्हाट आर द चेंजेस इन द स्टेट फंक्शंस इन्वॉल्व, ये हमारे लिए
important in thermodynamics, not the absolute values. Okay, so with this important point, let us conclude today's class. Okay, in the next class we have many more important topics to understand in this. So keep watching, keep liking and subscribe to this channel. Thank you very much.